Comments in C programming language make code easier to understand. If we write comments on our code, it will be easier to understand the code in the future. Otherwise, you will end up spending a lot of time looking at our own code and trying to understand it. Comments are even more important if you're working in a group. It makes it easier for other developers to understand and use your code. Using comments for debugging. While debugging, there might be situations where we don't want some part of the code. For example, in a program, suppose we don't need data related to height. So instead of removing the code related to height, we can simply convert them into comments. If we need height again, all you need to do is remove the forward slashes. They will now become statements, not comments. Kindly note it down. Comments are not and should not be used as substitute to explain poorly written code. Always try to write clean, understandable code and then use comments as an addition. In most cases, always use comments to explain why rather than how, and you are good to go. Basically, comments in C can be used to explain code and to make it more readable. It can also be used to prevent execution when testing alternative codes. Comments can be single-line or multi-line. In C programming language, single-line comments start with 2 forward slashes. Any text between 2 forward slashes and the end of the line is ignored by the compiler, will not be executed. This example uses a single line comments before a line of code. अगर आप इस कोड के अंदर देखें तो मेन का फंक्शन जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है किसी भी सोर्स कोड के अंदर, उसके बाद 2 फॉरवर्ड स्लैशेस लगाए गए हैं जो कि कमेंट को डिस्प्ले कर रहे हैं। कंपाइलर इसको रीड आउट नहीं करता, इसको इग्नोर करता है डायरेक्टली। बाकी जितनी भी लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं इंस्टेड ऑफ कमेंट्स, उन सबको कंपाइलर रीड आउट करता है। एग्जाम्पल नंबर 2. This example uses a single line comment at the end of a line of code. Same as it is, printf के बाद 2 फॉरवर्ड स्लैशेस लगाए गए और एक कमेंट जनरेट किया गया। उसे भी एज इट इज़ उसी तरीके से कंपाइलर इग्नोर करेगा जैसे कि printf से पहले लिखे हुए कमेंट को लास्ट एग्जाम्पल में इग्नोर किया था। In C programming language, multi-line comments. Multi-line comments start with / asterisk and ends with asterisk / Any text between / asterisk and asterisk /
will be ignored by the compiler. Comments are like helping text in your C program, and they are ignored by the compiler. They start with /* and terminate with the characters */. You cannot have comments within comments. They do not occur within a string or character literals. आप इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, मेन के फंक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद आप चेक करें और printf से पहले अगर मुझे एक से ज़्यादा लाइंस में कमेंट देना है तो मैं /* लिखूँगी और उसके बाद जितनी भी मुझे लाइंस में कमेंट देना है लास्ट में मैं * और / से उस कमेंट को, मल्टी लाइन कमेंट को क्लोज करूँगी. Single or multi-line comments. It is up to you which you want to use. Normally we use // for short comments and // for longer. There is an interesting information that is good to know. Before version C99 released in 1999, you could only use multi-line comments in C. Variables in C programming language. A variable is nothing but a name given to a storage area that our programs can manipulate. Each variable in C has a specific type which determines the size and layout of the variable's memory, the range of values that can be stored within the memory, and the set of operations that can be applied to a variable. The name of the variable can be composed of letters, digits, and the underscore characters. It must begin with either a letter or an underscore. Upper and lower case letters are distinct because C is case sensitive. Variables are containers for storing data values. In C, there are different type of variables defined with different keywords. For example, integer stores whole number without decimals such as 123 or -123. Another data type, that is float, stores floating point numbers with decimal such as 19.99 or -19.99. Another different type of variable, that is character, stores single character such as A or B. Character values are surrounded by single quotation. There will be basic variable types such as I have explained before. Number 1, integer, the most natural size of integer for the machine. Number 2, float, a single precision floating point value. Number 3, character, typically a single octet, 1 byte. Number 4, double, a double precision floating point value. Number 5, void, represents the absence of type. C programming language also allows to define various other types of variable which we will cover in subsequent chapters.
like enumeration, pointer, array, structure, union, etc. etc. Let us study only basic variable types. A variable definition tells the compiler where and how much storage to create for the variable. To create a variable, specify the type and assign it a value. Syntax: type, that is also called data type, then variable name, then equals to, and then value, and at the last terminator, that is semicolon, where type is one of C types such as int, character, float, etc. and variable name is the name of the variable such as x or my name. The equal sign is used to assign a value to the variable. So, to create a variable that should store a number, look at the following example. Create a variable called mynum of type int and assign the value 15 to it. Integer my number equals to 15. You can also declare a variable without assigning the value and assign the value later. Example number 2. Int mynum terminator, and on the next line mynum equals to 15. Kindly note it down, if you assign a new value to an existing variable, it will override the previous one. Example number 3. Integer, that is data type, mynum, that is variable name, equals to 15 is a value that is assigning to mynum variable having value 15 on this line of instruction. After that, next line of instruction having mynum variable equals to 10. 10 is a value that is assigning to my num. Now the output is 10. A variable declaration provides assurance to the compiler that there exists a variable with the given type and name so that the compiler can proceed for further compilation without requiring the complete detail about the variable. A variable definition has its meaning at the time of compilation only. The compiler needs actual variable definition at the time of linking the program. A variable declaration is useful when you are using multiple files and you define your variable in one of the files which will be available at the time of linking of the program. Though you can declare a variable multiple times in your C program, it can be defined only once in a file. Output variables. Output values or print text with the printf function. In this example, there is a printf function which is going to print a text that is hello world. In many other programming languages like Python,
Java, C++, you would normally use a print function to display the value of a variable. However, this is not possible in C. For example, int, that is data type, mynum, that is variable name, equals to 15 is a value assigning to the variable that is mynum. On the next line of instruction, there is a function that is printf function having a variable name that is mynum. Nothing happens to the code. To output variables in C, you must get familiar with something called format specifier. Format specifier are used together with the printf function to tell the compiler what type of data the variable is storing. It is basically a placeholder for the variable value. A format specifier starts with a percentage sign followed by a character. For example, to output the value of an int or integer variable, you must use the format specifier %d or %i surrounded by double quotes inside the printf function. For example, int itself is a data type, mynum is a variable name, equals to 15 is a value that is assigning to mynum on this line of instruction. After termination or after assigning the terminator, on the next line of instruction there is a function that is printf function having format specifier %d, variable name. Now the C compiler read it out. Something happens, that is your output. Or to print other types, use %c for character and %f for float. इस एग्जाम्पल में आप चेकआउट कर सकते हैं मेन फंक्शन की एग्जीक्यूशन के अंदर आपके पास एक डेटा टाइप है दैट इज इंट और उसके बाद mynum इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है। 5 वैल्यू असाइन हो रही है mynum को। उसके बाद नेक्स्ट लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन में फ्लोट एक डेटा टाइप है जिसका वेरिएबल है my float num। उसके पास वैल्यू है दैट इज़ 5.99। 5.99 वैल्यू असाइन हो रही है my float num वेरिएबल को। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसमें एक कैरेक्टर डेटा टाइप है जिसका वेरिएबल my letter है। उसके पास वैल्यू है दैट इज़ d वैल्यू असाइन हो रही है my letter वेरिएबल को जो कि डेटा टाइप रखता है कैरेक्टर की। जब हम इन वैल्यूज़ को प्रिंट कराएंगे तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रिंटफ के फंक्शन के अंदर ज़रूर लगाएंगे क्योंकि विदाउट फॉर्मेट स्पेसिफायर सी कंपाइलर इसे कंपाइल नहीं कर पाएगा। हमने printf फंक्शन लिखा, उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर %d लिखा। फर्स्ट %d हमने लिखा क्यों? क्योंकि हमारे पास इंटीजर था और उसके बाद हमने एस्केप सीक्वेंस दिया \n ताकि नेक्स्ट वैल्यू नेक्स्ट लाइन में आ सके, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू नेक्स्ट लाइन में आ सके। कॉमा सेपरेटर हम सेपरेटर यूज़ किया है। उसके बाद mynum इटसेल्फ वो वेरिएबल है जो इंटीजर डेटा टाइप में यूज़ हुआ है। तो जो डेटा टाइप होगी उसके आगे उसी का वेरिएबल नेम हम
आउटपुट प्रिंट कराने के लिए राइट डाउन करेंगे सेम एज इट इज %f used for float, again \n that is escape sequence, उसके बाद my float num, जो float डेटा टाइप के आगे हमने वेरिएबल नेम यूज़ किया था सेम एज इट इज़, हम उसे यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे ताकि हमें उसकी वैल्यू आउटपुट में प्रिंट होकर आ जाए. printf फंक्शन लास्ट that is %c. %c is the format specifier of character. उसके बाद हम \n लिखेंगे that is escape sequence again, और my letter वेरिएबल यूज हुआ है in front of character data type. तो जब हम कैरेक्टर प्रिंट कराना चाहेंगे तो हम कैरेक्टर के सामने लिखा हुआ वेरिएबल यूज करेंगे with the format specifier. और इस तरीके से आप चेक करें, यहाँ पे आउटपुट आया हुआ है फर्स्ट वन दैट इज़ 5, नेक्स्ट जो कि फर्स्ट वन दैट इज़ ऑफ इंटीजर दैट इज़ 5, उसके बाद 5.99 दैट इज़ ऑफ फ्लोट वेरिएबल, उसके बाद d दैट इज़ ऑफ कैरेक्टर वेरिएबल. आउटपुट to combine both text and a variable, separate them with a comma inside printf function. एग्जाम्पल 3 में ये एज इट इज डिस्प्ले हुआ है. printf फंक्शन में आप चेक करें, एक टेक्स्ट लिखा हुआ है माई फेवरेट नंबर इज, उसके बाद कॉलन लगाने के बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा हुआ है ताकि अगर जिस भी डेटा टाइप का आपको आंसर चाहिए वो फॉर्मेट उसके रिगार्डिंग आप उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख देंगे तो वो जो भी आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर प्रिंटफ फंक्शन में आ जाएगा. पहले आपने कंबाइन किया टेक्स्ट को, उसके बाद सेपरेट किया कॉमा से वेरिएबल को, टेक्स्ट कॉमा देन वेरिएबल नेम. इन द आउटपुट इज माई फेवरेट नंबर इज 5. % इसलिए यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे डेटा टाइप इंटीजर यूज हुई है. टू प्रिंट डिफरेंट टाइप्स in single printf function you can use the following. अब आप यहाँ पे printf function में चेक करिए, my number is %d, %d format specifier of integer and my letter is %c, %c format specifier is of character data type. Then again separated by a comma with the variable of integer that is my num, and again separated by a comma with the variable name my letter that is of character data type. And the output returns my number is whatever the number you have provided, that is 5, and my letter is whatever the letter you have provided, that is D. Add variables together. To add variable to one another variable you can use the plus operator. आप इस एग्जाम्पल में चेक कर सकते हैं, इंटीजर इटसेल्फ आपके पास एक डेटा टाइप है, उसके बाद वेरिएबल है x और उसके बाद इक्वल्स टू 5. दैट मीन्स जो वैल्यू 5 है वो असाइन हुई हुई है x को. द वेरी नेक्स्ट लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंटीजर अगेन इटसेल्फ आपके पास एक डेटा टाइप है और उसके बाद एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ हुआ है. यहाँ पे एक वेरिएबल है दैट इज y इक्वल्स टू 6. 6 एक वैल्यू असाइन हुई हुई है
y को. On the third line of instruction, you can check integer itself एक डेटा टाइप है, उसके बाद सम वेरिएबल नेम है, उसके बाद एक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है दैट इज बिटवीन टू वेरिएबल्स, और उन दोनों को एड अप कराने के लिए देयर इज एन ऑपरेटर यूज दैट इज ऑफ प्लस. प्रिंटफ में हमने क्या किया, क्योंकि हमारे पास डेटा टाइप इंट आ रही थी, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड %d format specifier separated with by a comma. Then there is a variable which have both variables x and y with the operator plus, that is sum. So the value is 5 plus 6 equals to 11. The output prints as 11. Declare multiple variables. To declare more than one variable of the same type, use a comma separated list. For example, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे integer x equals to 5, comma, that is separated by a comma. Another variable y equals to 6 separated by another comma, z equals to 50, and the terminator. The next line of instruction, there is a function that is printf function. We have used over here format specifier of integer that is %d separated by a comma. Then there is a variable x, an operator sign that is plus, again a variable y and an operator sign that is plus, again a variable z, and close the printf function with the terminator. That is, the output is 61. 5 plus 6 plus 50 equals to 61. One value to multiple variables. You can also assign same value to multiple variables of the same type. For example, आप यहाँ पे चेक करें int x separated by a comma, y separated by a comma, and then z. On the very next line of instruction after using terminator, x equals to y equals to z equals to 50. That means assigning the same value to multiple variables of the same type, same data type. Then next line of instruction, printf function written over here, there is a format specifier that is %d, because we have used data type that is of int separated by comma, x plus y plus z. X, y and z are variable names which we have used before. The output is 150. How? 50 plus 50 plus 50, that equals to 150. C identifiers. A C identifier is a name used to identify a variable, function, or any other user defined item. An identifier starts with the letter A to Z, capital, or A to Z in a small, or an underscore, followed by 0 or more letters, underscores and digit
0 to 9. C does not allow punctuation characters such as @ dollar or percentage sign within identifiers. C is a case-sensitive programming language. All C variables must be identified with unique names. Point number 2. These unique names are called identifiers. Point number 3. Identifiers can be short names like X and Y, or more descriptive names age, sum, or total volume. There is a notable thing: it is recommended to use descriptive names in order to create understandable and maintainable code. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे चेक करें इंट मेन इटसेल्फ वो फंक्शन है जो सबसे पहले किसी भी सोर्स कोड में एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद आपके पास एक लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, दैट इज इंट मिनट्स पर आर इक्वल्स टू 60। मिनट्स पर आर गुड नेम। अगर हम इस मिनट पर आर की जगह एक छोटा सा जस्ट एम लिख देते, दैट इज ओके, बट नॉट सो ईजी टू अंडरस्टैंड व्हाट एम एक्चुअली इज। फॉर सपोज इंट एम इक्वल्स टू 60। आउटपुट आपका सही आएगा, but again not so easy to understand what m actually is. General rules. The general rules for naming variables are: names can contain letters, digits, and underscore. Names must begin with a letter or an underscore. Point number 3. Names are case sensitive. For suppose my capital V AR and my small v AR are different variables. Point number 4. Names cannot contain white spaces or special characters like exclamatory mark, hash, percentage, etc. etc. Reserved words such as int cannot be used as names. C. Constants. When you do not want other or yourself to override existing variable values, use constant keyword. This will declare a variable as constant, which means unchangeable and read only. Constant int itself एक डेटा टाइप है, constant कीवर्ड है, my num एक वेरिएबल है, 15 इटसेल्फ एक वैल्यू है जो माइनम वेरिएबल को असाइन की गई है। आगे कमेंट्स में लिखा हुआ है माइनम विल ऑलवेज बी 15। माइनम 15 ही रहेगा हमेशा, क्योंकि इससे पहले कीवर्ड यूज़ किया गया है कांस्टेंट का। द वेरी नेक्स्ट लाइन माइनम इक्वल्स टू 10, दैट मीन्स कि यहाँ पे इसको ओवरराइड करने की कोशिश की गई है। अगर कांस्टेंट कीवर्ड नहीं होता तो ये ओवरराइड हो जाता, लेकिन क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन में पहला कीवर्ड कांस्टेंट का लिखा हुआ है तो ये कभी भी चेंज नहीं होगा और हमारे पास एक अदद एरर आएगा, दैट इज असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल। You should always declare a variable as constant when you have values that are unlikely to change. For example,
यहाँ पे मिनट पर आवर, मिनट्स पर आवर का मतलब ये है कि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, दैट इज़ यूनिवर्सल ट्रुथ। तो कोशिश ये की जाती है जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, या फिर उस वेरिएबल को कांस्टेंट लिखा जाए जो चेंज ना करना पड़े आगे सोर्स कोड में। जैसे पाई की वैल्यू 3.14 है जो कि कांस्टेंट है, तो इनके लिए कांस्टेंट का कीवर्ड यूज़ कर दिया जाता है स्टार्ट में। तो इस सोर्स कोड का आउटपुट आएगा दैट इज़ 60 एंड उसके बाद 3.14। 3.14 के बाद आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे 4 डिजिट्स आ रहे हैं 0 के, क्योंकि फ्लोट अप टू 6 डेसिमल तक डिस्प्ले होता है। ये फ्लोट की क्वालिटी है, तो दैट्स वाई आगे एक्सटेंडेड ज़ीरोस इसके अंदर एडअप हुए हुए आउटपुट में। नोट्स ऑन C constants. When you declare a constant variable, it must be assigned with a value. जब भी आप कांस्टेंट वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो आप उसके साथ उसको एक वैल्यू ज़रूर असाइन करेंगे, अदरवाइज एरर जनरेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, कांस्टेंट इंटीजर, कांस्टेंट itself is a keyword, integer data type, minutes per hour is a variable name, equals to 60, that is a value assigning to a variable minutes per hour. This however will not work. अगर फर्स्ट लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन में आपने इसे डिक्लेयर कर दिया है कांस्टेंट और डेटा टाइप देके, कांस्टेंट कीवर्ड डेटा टाइप और उसके बाद वेरिएबल नेम देने के बाद टर्मिनेटर से क्लोज कर दिया है, नेक्स्ट लाइन में आपने उसे इनिशियलाइज किया है, तो या फिर नेक्स्ट लाइन में आपने उसे वैल्यू असाइन की है, तो ये कंपाइलर एक एरर जनरेट करेगा। वो एरर होगा असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल का। जब भी आप डिक्लेयर करेंगे कांस्टेंट वेरिएबल को, it must be assigned with a value. Good practice, C constant. Another thing about constant variable is that it is considered good practice to declare them with uppercase. It is not required but useful for code readability and common for C programmers. For example, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेन फंक्शन के बाद फर्स्ट लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन में कांस्टेंट का कीवर्ड लिखा हुआ है, उसके बाद डेटा टाइप, उसके बाद जो आपने वेरिएबल नेम दिया है, ये इटसेल्फ एक गुड प्रैक्टिस कंसिडर होती है सी कॉन्स्टेंट्स के लिए कि उसे अपर केस में लिख दिया जाए। उसके बाद इक्वल टू 1980 असाइन कर दिया है बर्थ ईयर वाले वेरिएबल को। आप चेक कर सकते हैं, आउटपुट इज 1980। ये एक गुड प्रैक्टिस कंसिडर होती है कि अगर आप इसे अपर केस में लिख दें। थैंक यू।